Good afternoon. We know that the JPC is going into this 2G inquiry. We also know through the media a whole lot of information which is coming out related to the 2G spectrum scandal. It does not seem anymore to be an ally affair. Alliance partner की सिर्फ सीमित एक मामला ना रहे, अलायंस पार्टनर से ज़्यादा भी है इसमें. इसका ओवरटोन्स ज़रूर कांग्रेस के ऊपर भी है. कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर इसमें दिख जा रहा. Just to recall, a few days before and few days after the 10th January issue of licenses, 9th January को फिनांस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लोग फिनांस मिनिस्टर को एडवाइस भी दे चुके थे कि ऑक्शन की रूट में ही 2G स्पेक्ट्रम देना है. In spite of that, the finance minister's advice was not known till later. But 10 जनवरी को लाइसेंसेस इशू किया गया था. And we know the way the licenses were issued on 10th January 2008. 10th January, there was also supposed to have been a telecom commission meeting. That interestingly got postponed to 15th January. And on 15th January, the then Finance Minister P. Chidambaram writes a letter to the Prime Minister saying that in future spectrum allocations can go on auction route, but what has happened in the past, even though it is only 5 days past, should be treated as closed chapter. The BJP feels the attempt to cover up this scandalous decision of 10th January started there. उस 15 तारीख की चिट्ठी से शुरुआत हुई ये कवरअप का. 15 तारीख की चिट्ठी में सुझाव प्राइम मिनिस्टर को आने वाले स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंस को ऑक्शन में देने के लिए, मगर जो 5 दिन पहले हुआ उसको बंद हो गया चैप्टर, ऐसे ट्रीट करने के लिए एडवाइस फिनांस मिनिस्टर ने दिया है. कवरअप तब से शुरू. Procedures were violated in taking this decision on the 10th January 2008. Complete violation of procedures. Regulations, ट्राई हो दूसरे और हो, उनके रेगुलेशन को दरकिनारे कर दिए. We like to remind you that in 2003 the cabinet had decided that decisions on fixing of price related to 2G spectrum allocation would be done by the ministry in consultation with the DOT and with the approval of the finance minister. The finance ministry के approval ज़रूरी था. फिर भी 10 तारीख जनवरी जब 2008 में लाइसेंसेस की इशू हुआ, फिनांस मिनिस्ट्री से ऑक्शन के ही एडवाइस था प्रेफरेंशियल एलोकेशन की इनकार करते हुए. फिर भी 10th January they went ahead giving the licenses not on auction basis. But on 15th the finance minister writes a letter saying you treat this matter closed. Even then he could have asked for an inquiry, which he did not do. सिर्फ 5 दिन उसके बाद प्रोसेस तो शुरू होगी. लाइसेंस एक्चुअली देने का प्रोसेस तब से शुरू होगी ज़रूर, मगर उस समय भी रोकने का कष्ट नहीं उठाया फिनांस मिनिस्टर. 15 तारीख जब वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, प्रोसीजर्स को वायलेट कर किया. और 2003 का कैबिनेट डिसीजन जो है, that in consultation with DOT and in consultation with the finance ministry and approval of the finance ministry only will the distribution done. But finance ministry's approval did not come. Violations were very clear.
regulations were not cared for. That's also very clear. But a meeting with the telecom minister, Mr. Raja, and the finance minister happens 4 months later on 29th May 2008. क्या कारण था इस मीटिंग का? सिर्फ सब डिफरेंसेस को सीमेंट करते हुए, रेगुलेशंस वायलेशंस कुछ नहीं है, एक ही मत है, हम भी अप्रूवल दे चुके हैं, ऐसे एक नाटक करने के लिए 29 मई 2008 में एक मीटिंग हुआ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को एक ही मत है ऐसे करके एडवाइस और इंफॉर्मेशन देने के लिए उस मीटिंग को रखा गया 29 मई 2008। It was a meeting very clearly intended to gloss over the differences, to patch up any differences which would have arisen. The decision-making process has violated so many norms, existing rules, laid procedures, and to cover up that there was a difference of opinion between the Department of Telecom, the Minister of Telecom, and the Finance Ministry, a meeting was scheduled on the 29th May 2008 between the Finance Minister and the Telecom Minister. So you understand that it is a very crucial meeting. A crucial meeting which was expected to bring in a semblance of unanimity, a pretension of unanimity in decision. Just a pretense of no differences, all of us are together, Ministry of Finance has also approved it. That meeting today has no records. Absolutely no records, and this was admitted by the Department of Economic Affairs in the Joint Parliamentary Committee which was inquiring into this matter. It is a very serious lapse, or was it deliberate? The BJP wants to know if absence of a formal record, failure to have a minutes of a critical meeting of this kind, was it deliberate? Earlier, the 9th January 2008 ka advice that it should only go through auction was also omitted, was ignored. The next day, the licenses are issued. Was that also a deliberate omission? Deliberate omission to go on auction in spite of the advice. Deliberate was it? We are asking a question. Not to have a formal record of the subsequent meeting held 4 months after the actual distribution of the license. And is it right to give the Prime Minister oral briefing on a matter like this? Oral briefing on a matter which brought 1,76,000 crores ka loss to the exchequer. We find this links the Congress also to the sequence of conspiracies which has guided this 2G spectrum. 2G spectrum घोटाले एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है, उसमें फिनांस मिनिस्टर 29 मई का दिन, जिस दिन वो टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ मीटिंग रखा है, उसका रिकॉर्ड कम से कम न रखने में उस कॉन्स्पिरेसी में उनका भी एक रोल है, ये बीजेपी का मानना है। एक डेलिबरेट ओमिशन हुआ, ऑक्शन के एडवाइस को नकारते हुए चुपचाप बैठे। 10 तारीख को लाइसेंस इश्यू होता है, 15 तारीख को आप मैटर क्लोज करो करके एडवाइस कर रही हो, फिर बाद में 4 महीने के बाद जब मीटिंग रख रहे हैं कि डिसीजन यूनिलैटरली हुआ, हम सबके सहमत में हुआ, ऐसे बोलने के लिए उसका ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को ओरली दे रहे हैं, और उस मीटिंग का कल एडमिशन हुआ ऑफिशियली कि रिकॉर्ड भी नहीं है। इसीलिए हम मानते हैं कि ऐसे ग्लेरिंग ओमिशंस जिस मंत्री ने फिनांस मिनिस्ट्री तब का, जिस मंत्री ने ऐसे ग्लेरिंग ओमिशंस किया है, ग्लेरिंग ओमिशंस ऑफ ड्यूटी किया है, जिस मंत्रिमंडल में उनका उस मीटिंग का कागज तक नहीं है, वो पद में आज तक रहना नॉट राइट। He should be removed by the Prime Minister.
and a documentary evidence जिस क्रूशियल मीटिंग का नहीं है और उस एविडेंस को आज भरपूर करने का कुछ और रास्ता नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए हम आज डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्टेटमेंट देना है, क्योंकि ओरल ब्रीफिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। कौन देंगे उस मीटिंग का जो भी निर्णय हुआ उसके ऊपर ऑथेंटिक रिपोर्ट? उस मिनिस्टर तो दे नहीं सकते अभी, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, वो डिपार्टमेंट बोल चुके हैं। उस इंफॉर्मेशन को ओरली ब्रीफिंग सुनने में जिनको आया वो प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट उस जगह पे आना जरूरी है टू फिल दैट एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो आज बीजेपी ये डिमांड करती है कि तब की फिनेंस मिनिस्टर को तुरंत कैबिनेट से निकालना चाहिए और we will say it. What is the hesitation? P. Chidambaram. Second, that the Prime Minister who had the oral briefing of what was decided on 29th May should now give us a statement on what actually was the briefing given by the ministers, the two ministers, the finance minister and the telecom minister, then Mr. Raja. And the third, yes, the JPC is inquiring into this matter. हाँ, पूरे 2G allocation के ऊपर JPC जांच कर रही है। फिर भी इस एक विषय के ऊपर जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कम से कम नहीं है, इट्स नॉट इवन मिसिंग, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मतलब पहले से ही तैयार नहीं रखे। 2 डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट अगर बैठते हैं तब भी मिनट्स रखते हैं सरकार में। इधर 2 मंत्री इतना इंपॉर्टेंट निर्णय के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और उसका रिकॉर्ड तक नहीं है। इसीलिए इस स्पेसिफिक इश्यू के ऊपर हम जांच मांग रहे हैं, अलग फोकस्ड जांच होना चाहिए। एंड इतने जब हो रही है, यू हैव द टेलीकॉम मिनिस्टर coming up or his ministry coming up to the JPC and saying during NDA time probably 43,000 crore का नुकसान हुआ। जो मंत्री, टेलीकॉम मंत्री 3 महीने पहले 2G में घोटाला ही नहीं है ऐसे बोला है और जो नुकसान तक नहीं है ऐसे स्टेटमेंट दिया है, आज वो बोल रहे हैं कि 43,000 का NDA के समय नुकसान हुआ। इनके हर एक सेंटेंस के ऊपर भरोसा रखने वाली चीज है आज। इसीलिए जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच इज कम टू द JPC टू से दैट देयर वाज अ 43,000 crore नुकसान लॉस ड्यूरिंग NDA टाइम एंड टू टेक दैट टू कमेंट ऑन इट, वी फाइंड इज absolutely baseless. A minister who said that there was no loss in 2G, a minister who said, in spite of the CAG having said it, the minister who said there is no scandal at all, where is the scandal there? Today tells us that NDA or his department tells us that NDA's time there were 43,000 crore ka loss. I think ministers should and their ministry should look at documentary evidence before speaking. There is, as regards the NDA time, the CAG report does not tell you any quantified loss. Where does this 43,000 crore come now? So without documentary evidence, I think departments or ministry speaking is inappropriate. Thank you. Anything else? Any questions? एंड आज आपका शिकायत वैलिड नहीं है, हिंदी में बहुत सारे बोल चुकी हूँ मैं। Today I hesitate to say how many more ministers are going to be linked up with many more such scandals. The Prime Minister is probably heading one of this country's worst ever and corrupt ever cabinets, and it hurts this party BJP to say this, but that is the reality.